I'm just arranging for another laptop. एक और laptop हो रहा है. Namaste, namaste Neela, and all those who have just joined in. Just can I just log off? Put my video off, and I'll just get back to you with another laptop. Huh? Sorry. You'll be there. I'm there with you. I've just put the video off, and I'm getting my laptop arranged. This laptop is not working. I'm just saying. Zoom is updated. Okay. Okay. So my other laptop also we have a challenge there, and it's updating. Okay. No worries. जैसे वो होगा मैं आपको जब तक अपना मोबाइल से करते हैं मैं मोबाइल को यहाँ पर लगाता हूँ सामने एंड the only challenge is I would not be able to read the comments which are there. और ये माइक जरा मैं दूर कर देता हूँ. जय श्री राम ऋषि and all of you have joined in there. Some technical glitch, but ठीक है, no worries. Those who have joined me for the first time, namaste and welcome to Happy Minds. And this is not the way we have Happy Minds. कभी कभार हो जाता है, once in a blue moon. होता कभी चुकुन. So so this is just a struggle with our. हाँ जी, अंजलि says राम जी. Yes, आप सबको राम राम. Nice to follow. Well, yeah, absolutely. So normally those who have joined me for the first time, what we do is we start with meditation, we start with the bhajan, we start with connecting with our Creator, with the Lord, and in any form, every form, whatever form you see your God, your Creator in, that's how we connect, and then we move on to have a round of success stories. I have a few success stories which are on my mobile right now, and I would share the moment I have my laptop on. I would like to read those success stories for you. So हम start करते हैं meditation से, फिर we have success stories, and then I have some sharing which I do, and today happens to be a day just 2 days before the inauguration of the Bhavya Ram Mandir in Ayodhya. So I just thought I'll share a few insights from there and whatever my experience has been. और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी share करें your understanding and your connect within that thing. So that's the entire flow of the Happy Minds for today, and it has been the flow for many Happy Minds in the past also. And of course, आप लोग कुछ share करना चाहेंगे about your growth journey, about your implementations. You're more than welcome to share your stories. And so we have in the chat. Okay, everybody is in Jai Shri Ram. Chalo, great. Lovely to see all of you this very morning. One of the success stories is we have from Rohan Manot, Crystal Rohan Manot, and actually there was a long note which was there along with the success story, which the note is in the mobile, and I'm unable to read that note. But his company Harnex, they and his partners Rohit, Rohan, his brother Devendra, they were all on stage yesterday, and they were awarded the prestigious award by MCCI, and they got the award for the greenest company. And he says the best thing about that was that he says this thought of moving his company towards the greener side, towards being more environment conscious, was a result of one of the programs which he was a part of way back in I think 2016 or 17. हमने एक program organize किया था where we had Ricky Cage, the Grammy Award winner Ricky Cage, जो आए थे हमारे पास, and उन्होंने environment को लेके उन्होंने national anthem एक create किया था. And I think I remember that evening, and Rohan was also a part of that evening, and he picked up from there that can I, over a period of time, also ensure that my company, though we are into manufacturing, क्या हम अपनी company को, can we be conscious on the environment side, and can we go more green than what we could ever have thought of? And his efforts were recognized by MCCI, and he got recognized yesterday for that very initiative. So congratulations, Rohan, and the entire company Harnex for this wonderful achievement. I'm sure organizations which are into manufacturing, which are into any kind of enterprise which is there, अगर थोड़ा सा initiative, थोड़ा सा conscious होते हैं about their carbon footprints, तो मुझे लगता है कि
बहुत कुछ हम लोग नुकसान होने से इस पृथ्वी को बचा सकते हैं. दैट्स वन थिंग. सेकंड पॉइंट इज कौन सी चीज ना कब कहाँ पर जो है हिट कर सकती है, यू नेवर नो. सो यू नो 5 years ago आप आए हो, बैठे हो, एक प्रोग्राम चल रहा है, एंड देयर इज समबडी कमिंग एंड स्पीकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, एंड इट जस्ट सिंक्स इन, एंड देयर यू टेक द इनिशिएटिव अहेड. तो मुझे लगता है कि यू थ्रो अ स्टोन इन अ पॉन्ड एंड यू कैन नेवर इमेजिन हाउ फार द रिपल्स विल गो. सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क. आपको मालूम नहीं कि कब तक वो कहाँ कहाँ उसके रिपल्स पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ वो गुडनेस फैलेगी. एंड इट्स अनइमेजिनेबल कि कहाँ कहाँ वो फैल सकता है और कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर सकता है. So I also I was surprised when I read that note from Rohan, and he says that's where the beginning happened. And वो beginning को होते होते आज 5-6 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने के लिए. बट द बिगनिंग हैपेंड फ्रॉम देयर. सो एक तो बिगनिंग करना जरूरी है, दूसरा बिगनिंग के बाद कोई किसी इंसान को उसको उठाना जरूरी है टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट सक्सेस इज नेवर फाइनल. आपकी कामयाबी, एंड आई ऑलवेज से दैट इन हैप्पी माइंड्स, शेयर योर सक्सेस स्टोरीज, शेयर योर इम्प्लीमेंटेशंस. क्योंकि कोई भी शेयरिंग आपकी, वो किसके लिए क्या बीज बन जाए, क्या सीड बन जाए, you can never imagine. And every input from the outside world can be a trigger for something substantial, something awesome, something wonderful. तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप वो ट्रिगर दे पा रहे हो, नंबर वन. एंड नंबर टू, आप वो ट्रिगर ले पा रहे हो और उसको कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हो, कि उसको ट्रिगर को आप लेके आप अपनी जिंदगी में उसका कुछ, अपनी जिंदगी को निखार पा रहे हो, नहीं निखार पा रहे हो. दैट्स सो वंडरफुल. सो दैट्स व्हाई somebody shares a story of losing weight. So that is a success from his side or from her side. But उसकी कामयाबी कहानी कि उसने 10 किलो वजन कम किया, 20 किलो वजन कम किया. That story can become the starting point for somebody who's thinking of losing weight. So that's why I always say success is never final. तो आपकी कामयाबी अभी हो गई है तो ये फाइनल नहीं है. आपकी कामयाबी किसी और के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है. And that is why it is good, it is important that we make noise. We make noise of good things happening around us, and we make noise of good things which we have done. तो ये अपनी टीम की या अपना बैंड बजाने वाली बात नहीं है. और अपना बैंड बजाओ, जब उसका आप उसका हिस्सा हो तो बजा भी सकते हो, लेकिन इट इज मोर अबाउट being the instigator for somebody else. That's why I always share success stories. So love you, Rohan, for sharing that story with us. Another success story which came out, I was told, was by Chaitanya Joshi. He's from Ahmednagar, and he it's a very simple, lovely story which he shared, and exact words are in the mobile, so I'm unable to read that, but whatever I can recall, मैं आपसे share करता हूँ. He says, "Sir, I gave a presentation, which was a technical presentation in some forum, and this was my fourth or fifth presentation." And he says, जब पहली बार मैं जब प्रेजेंटेशन देने गया था, तो पूरी बॉडी जो है थर थर ऐसे ऐसे लग रहा था कि हर पार्ट हिल रहा है, हर पार्ट कांप रहा है. ऐसे करके वो प्रेजेंटेशन दिया मैंने. बट आपके शब्द के fear is there, and it's only when you go beyond fear that you can achieve what you want to achieve. And डर तो होगा ही हर चीज में. And he says that very thought कि डर है और डर तो रहेगा ही, but you have to go beyond fear, kept on pushing me. And this was the fifth presentation which I gave. कोई डर नहीं, कहीं पैर नहीं कांपे, कहीं धक बाजी नहीं हुई. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन गया मेरा. And I felt that as a public speaker, एक मकाम पे मैं पहुंच गया. So listening to that sharing of his also made me feel, wow, that these are small victories, small moments of success. And I think these moments should be celebrated, should be shared, and you should rejoice on these moments. So a few success stories from myself. That's why I say every HM, आप लोग कुछ ना कुछ share करो ना. And ये sharing करने से क्या होगा कि somewhere somebody else will kind of get inspired to take it ahead. I think. हाँ जी. You will have to continue with the mobile. हाँ. And I can give you another mobile where you will need the chats. Okay, ठीक है. So I think our laptops will not work. So I have to move on with the mobile only. ठीक है.
तो अभी जो है मैं देखता हूँ चैट वेट में क्या आ रहा था. This is the only thing that you'll be able to see as of now because I logged in late. अच्छा अच्छा. Okay, one second. Just Ganesh has. Okay. हम्म. चलो ठीक है. So here we are, and कोई बात नहीं. Sometimes you plan something and things don't happen. My laptop kind of gave up on me today, but it's okay. We will see how we can take it ahead. Okay, keep on writing your chats. I have another device with me ready where I would be reading it from that device and responding to you. And those who have joined me on YouTube, namaste and welcome to this week's Happy Minds. This is Happy Minds number 1179. The third success story which I remember is from another Chrysalis in Sandeep Bharange. And unka story aisa hai ki he's into electrical contracting and work. So he says, abhi ek do din pehle PM Modi ji ne 15,000 घर along with the CM of Maharashtra and Deputy CM Maharashtra, उन्होंने 15,000 घर they offer to the people of the lower economic section of society. तो उनको उन्होंने 15,000 घर दिए. He says उसका सारा इलेक्ट्रिकल का वर्क, चाहे वो स्टेशन बनाना हो, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन बनाना हो, लाइंस डालनी हो, वो सारा काम हम लोगों ने किया. एंड we felt so proud that we could be a part of such an initiative. So that's great news. And another 15,000 homes are going to be completed by end of March. So around 30,000 homes mein, he says we were the power, we are the power behind that in terms of the real power. So congratulations, Sandeep, and wish you all the very best. Sir, we can hear and see you perfectly. Can't make out the difference. ठीक है यार, वो तो मेरी कलाकारी है. तुम्हें मालूम नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ. But I'm struggling here in terms of. So I got a few devices. I got a laptop which is not working. I got one phone there which I'm talking to. I got another phone in my hand here. एकदम पूरा सर्कस चालू है इधर मेरे पास. तो कोई बात नहीं. राम जी के नाम पे सब चालू होने तो कोई दिक्कत नहीं. राम जी देख लेंगे बाकी. चलो ठीक है. And you keep on posting your comments. I'm seeing it from another device here. तो आप लोग comments डालते रहना. हाँ, मेरे साथ हो कि नहीं हो आप लोग? हाँ जी. हाँ. Yes, you are there. Great. चलो बढ़िया. Stay with me and stay alive. हाँ. चलो, मैंने एक स्टोरी डाली थी कुछ दिन पहले about कि Modi ji has kept a 11-day fast for the inauguration for the installation of the Ram temple. Consecration हो रहा है तो उसके लिए उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा था. And said, what are you going to do? So I said, at least कुछ celebrations तो होने चाहिए, कुछ हंगामा तो होना चाहिए. So my office is kind of decorated. It will be decorated more tomorrow and day after. So 22 तारीख को it will be kind of a Diwali or mini Diwali, whatever you say. My home is going to be decorated with diyas and हम लोग फूलों से घर को सजाएंगे. हमारा एक मंदिर है, रामलला का दरबार हम बोलते हैं, हमारे घर में वो है. एंड वो सजाया जाएगा. तो फ्रॉम आवर साइड this is our way of welcoming Shri Ram in his abode. And the wait has been pretty long, right? The wait has been pretty long, but ठीक है. जब जब जो होना होता है तब वो होता है. And I feel ये वो moment है which will go down in history as a very powerful moment, a moment which generations back, when they look back, they will feel wow about this moment. And even in UP, the योगी जी ने जो है उसको तो holiday declare किया हुआ है आज के दिन को. So I'm sure I can just imagine the kind of frenzy which is there. And on top of it, हमारे बाबूजी जो है, my father, वो तो super excited soul है. And touchwood he तो उन्होंने कहाँ से 4-5 दिन पहले उन्होंने क्या, उनके अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब पूरे कॉन्टैक्ट्स खोले. उन्होंने कहीं से पास का इंतजाम किया फॉर द टेम्पल. एंड उनको पास भी मिल गया टेम्पल में जाने का. उन्होंने फिर यहाँ से टिकट्स भी करा ली जाने की. एंड गॉड नोज व्हाट इज, बिकॉज़ ही इज गोइंग टुडे टू अयोध्या. सो एटलीस्ट हमारे घर से एक रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है टू अयोध्या. एंड आई एम
looking forward to listening from him his experience of coming back from there. और अक्षत आई होगी आप लोगों के सोसाइटीज में, आप लोगों के घरों के, तो आई एम श्योर आप सबने अक्षत ली है, और नहीं है तो बचाओ उस अक्षत को. हमारी सोसाइटी में आई थी अक्षत, वहाँ मैसेज आया कि रखी हुई है, बट नोबडी वाज पिकिंग इट अप. So Rachna went there. She picked up the Rakshat from there, and she ensured that every house, whatever homes she could go to, उन्होंने वो photograph of temple and Akshat सब घरों में जितने घर में जाके दे सकती उन्होंने दिया. So I think that's also happening on a large scale. So people are kind of deeply connected. तो आज का उस subject, I was thinking about what to share with you. तो कुछ बातें मेरे मन में आई. आई थॉट लेट मी शेयर अबाउट लॉर्ड राम, प्रभु राम, श्री राम के बारे में कुछ बातें हैं जो नॉट दैट यू डोंट नो, नॉट दैट आप अज्ञान है उससे. तो बचपन से हम सुनते आए हैं, बचपन से हमारे जहन का, हमारे जीने के हिस्से का है, वो हिस्सा रही है. बट स्टिल रीइंस्टेट करने में, वापस उसको रियलाइज करने में कोई नुकसान नहीं. देयर इज नो हार्म इन इट. So I just thought of sharing a few things with you. The first is, I feel बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है where we are not apologetic about celebrating our who we are. We are not apologetic. और जितना मैं सोचता हूँ इस बारे में, उतना मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से हमें we were kind of made to feel apologetic about being who we are, being a Hindu, being celebrating our own selves. तो ये आज जो माहौल है, it is all about, it is so wonderful that we are not ashamed. We are मुझे याद है एक सेशन था, बहुत साल पहले मैंने एक सेशन ले रहा था, एंड उस सेशन में I normally would not talk about religion. I would not talk about, so I would just take meditation, and then meditations I would just move on. So मैंने उस सेशन में ऐसी बात करी about Hinduism, and I remember that very well. तो मैं ऐसी बात कर रहा था. It was just out of in context to something which was there. तो बात करते करते मैंने बताया कि हिंदुइज्म क्या है. So without, it was not comparison. It was just about who we are as a culture, as a religion. We don't call ourselves a religion, but then as a culture, what is Hinduism? मैं ऐसे बता रहा था मेरी समझ के हिसाब से. So one of the participants, he, after the talk was over, he came to me and he said, "Sir, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए." I said, "क्या नहीं करना चाहिए?" नहीं, आपने हिंदुइज्म के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. मैंने कहा, क्यों नहीं करनी चाहिए? मैंने कुछ गलत बोला क्या? He says, नहीं, आपने गलत नहीं बोला, बट आप मेंटोर हैं, आप कोच हैं, यू शुड नॉट स्पीक. तो मैंने कहा, मैंने किसी की बुराई तो नहीं करी. मैंने कोई वो चीज नहीं बोली जो मैं नहीं हूं. तो मैं तो वही बात कर रहा हूं जो मैं हूं. और स्पीकिंग अबाउट हु वी आर, स्पीकिंग अबाउट आवर ओन कल्चर, ये कब से गलत हो गया? एंड देन इट हिट मी, 7-8 साल पहले की बात. एंड देन इट हिट मी दैट वी आर ashamed or we are apologetic about we speaking about who we are. So this transformation of we speaking about who we are is not accepted well. And this is termed at times as being fanatic, or this is being called as Hindutva or whatever you call it. But I feel that अगर हम अपने बारे में नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? और हमारा बोलना किसी को दबाना थोड़ी ना है. एंड हमारा बोलना जो है वो अपने बारे में. तो सडनली दिस वेरी थॉट कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम वेयरिंग श्री राम का कुर्ता, आई हैव गॉट अ श्री राम का मेरे पास ध्वज है पीछे, और आज एचएम में मैं श्री राम की बात करने वाला हूँ या कर रहा हूँ. तो आई एम नॉट अपोलोजेटिक, आई एम नॉट ashamed, आई एम नॉट afraid. एंड व्हाई शुड वी बी? Why should we feel low about who we are? And I'm not saying that we have to. So आप अपने लिए खड़े होते हो तो किसी को दबाते हो, ऐसा किसने बोला? तो ये नैरेटिव जो बिल्ड हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट if you stand for Hinduism, then this means you're anti somebody. ये क्या मतलब हुआ? And look at the narratives being built over the last so many years. Every movie in the 70s
it started building in the 70s 80s में नैरेटिव बिल्ड होना चालू हुआ इन बॉलीवुड कि जिसने टीका लगाया वो जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट होगा, वो गुंडा होगा। तो सारे गुंडे टीके वाले, सारे गुंडे वो स्कार्फ पहने वाले। तो द नैरेटिव वाज बिल्ड, हम वही पिक्चर देख के बड़े हुए एंड दैट बिकेम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो ये नैरेटिव बिल्ड होते गए। तो ये भी नैरेटिव था दैट यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ और फॉर योर कल्चर। दिस मींस यू आर अगेंस्ट समबडी। एंड मैं तो अभी एक इनिशिएटिव ये भी सोच रहा हूँ चालू करें कि once in a week you should wear your the dress of your culture. Once in a week you should have a tika on your forehead and walk out. Why should you feel ashamed of going out with a tika? And it's nothing against anybody. It is just for the way you want to live. तो वो फाइट करना कि आप कौन है, आप उसको बताने से फाइट करना, तो इट रिफ्लेक्ट्स how much it has been suppressed over the last so many years. So coming back to the day हम जो बात कर रहे हैं, it's a wonderful day. Consecration होने वाला है अयोध्या में, and it's almost 500-600 years of struggle. So many people lost their lives. So many people gave up on all that which they were doing to fight for this, and that too legally. And look at the way it is. Legally, you fought for it, and legally you got that happening. And another thing which I want you to change this narrative that Ramayana and Mahabharata ये एक mythology है। बचपन से हिस्ट्री बुक्स में हमें यही पढ़ाया गया, mythology है। mythology नहीं है, it's history, इतिहास है। सो रामायण और महाभारत इतिहास का हिस्सा है, ये mythology नहीं है, कोई मिथ नहीं है, भ्रम नहीं है, मिथ्या नहीं है, ये हकीकत है, ये हिस्ट्री है। I was in Angkor Wat, where we have the world's largest and the biggest temple, and it's in ruins now. But I especially wanted to go there to understand, the entire architecture, the entire culture of the country, and more so because it connected with us. And जब मैं वहाँ गया, I was so taken aback by the vastness, the huge complex it was, and it's now well designed. And fortunately, we had a good guide who we took along with us, and he explained the entire the temple structure to us. And सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे याद है, जो दो बातें मुझे समझ में आई। एक तो it was very scientific in its make. The entire temple was very scientific. The way it was, the sun कहाँ से आएगा, and then rays कहाँ से आएंगी। तो sun की rays जो है गर्भगृह में कहाँ से आएंगी, उसके लिए प्रोविजन करना। I'm talking about a temple which was made 1300 years back. And the guide told me that these stones with which the temple was built, this stone is not found in Cambodia. This stone is not found in this part of the world. And ये stone पाया जाता है जावा, सुमात्रा में, which is thousands of miles away. तो कैसे समुद्र में शिप से ये लाया गया होगा, and that too so much of quantity of stones. And the moment you enter the temple, at the base of the temple, जो उसका base है, around and then there's an entrance in the center. On the left side is Ramayana and the right side is Mahabharata. Engraved in stone, पत्थर में बनी हुई है महाभारत। पूरा उसने बताया कि ये महाभारत का पूरा story, and you can actually, if you know Ramayana and Mahabharata, you would be able to connect. तो हमने पूरी वो कहानी वो पत्थरों में figures के रूप में देखी। So ये कोई mythology नहीं है कि किसी ने कहानी मन में आया, उसने कहानी बना दी। It's a part of history. तो जिस कल्चर में हम हैं, उस कल्चर में, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला, कि कोई भी जीव अगर एक ऐसी जिंदगी जी लेता है जो हमारी नजरों में दिव्य है, हमारी नजरों में जो बड़ी है, जो डिवाइन है, हम उसको देव बोल लेते हैं, उसको हम भगवान को रूप दे देते हैं। So I spoke about the tigress of Ranthambore by the name of मछली। तो उसकी लाइफ उसने जी इस ढंग से, जहां उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए एलिगेटर से फाइट किया, जहां उसने इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। So people started revering that tigress,
और उसके नाम क्या उन्होंने एक छोटा समाधि भी बना दिया. सो दैट्स अ कल्चर वी कम फ्रॉम. ये एक टाइग्रेस को लेके हम उसको वी हैव रेफरेंस फॉर दैट. तो हम उस कल्चर में कोई इंसान अगर अच्छी जिंदगी जीता है, अगर हम इसको इस बात को भी फैक्ट इस बात को ले लें कि भाई लॉर्ड राम, भगवान राम जो है, he was there thousands of years ago, so he lived his life in such a way where the world was forced by the way he lived his life to see him as God, to see God in him. तो ये आस्था का विषय is not, it's a fact that he lived and he kind of through his life shared so many wonderful messages to the world that this is the kind of life we can live. And उनके अगर आप रामायण से अगर आप बोलोगे तो everybody has so many lessons to pick up. And just a few for you, which I was thinking about what to share with you. Not that you don't know, but just to share with you a few lessons which I picked up from Ramayana, from Shri Ram's life. Imagine karo कि आप, you know, the first lesson which I feel is that this is life which we are in, and life can be unfair, life can be unjust, life can be barbaric, can be ruthless, and many times it is, because that's the way life is. और हम उस रूथलेसनेस को, उस अनफेयरनेस को हम हैंडल नहीं कर पाते. इमेजिन करो कि अगर नेक्स्ट दिन आपका जो है कोरोनेशन होने वाला है, आप राजा बनने वाले हो, and since last so many days the preparations are going on, it has been put in your mind, you're seeing it happening कि आपका राजाभिषेक होने वाला है, and you want to be the king of Ayodhya. उस समय क्या फीलिंग आ रही होगी, क्या एक स्टेट होगा मन में कि आप एक राज के राजा बनने वाले हो, and everybody is talking about it. People are happy. People want you to become the people want you to take over the kingdom. People want to be under your rule. People are preparing. Every house is lit with celebrations, with diyas. कि भाई श्री राम बनने वाले हैं राजा. And just a night before, this coronation is to happen, your stepmother takes you to a room and she says, "Beta, tu raja nahi banega." And his father says, "You will not become the king." And not only that, तुम राजा नहीं बनोगे वो तो एक बात है, तुम्हें 14 साल इस राजघराने से बाहर रहना पड़ेगा. 14 साल you have to be out of Ayodhya, out of the kingdom, and you have to stay in exile. आपको जंगल में रहना पड़ेगा, वन में रहना पड़ेगा. तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि राजा हटा दिया तो आप फिर भी राजमहल में रह रहे हो, चलो आपको फिर भी सुख है, आप फिर भी सब चीज एंजॉय कर रहे हो, बट आपको तो अलाउड ही नहीं है रहना. एंड कल सेरेमनी होने वाली है, द होल किंगडम इज गोइंग टू सेलिब्रेट, एंड सडनली इट इज टेकन अवे फ्रॉम यू. मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका छोड़ो, अगर आपका कल प्रमोशन होने वाला है, आप जिस ऑफिस में काम करते हो आपका कल प्रमोशन होने वाला है, एंड यू आर रेडी एंड यू नो दिस दैट इज गोइंग टू हैपन. एक महीने से आप तैयारी में हो, 15 दिन से आप तैयारी में हो, हफ्ता हो गया है, 3 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं, घर में सब खुश, आसपास सब लोग खुश, ऑफिस में सब लोग खुश, और आप वेट कर रहे हो यार कल प्रमोशन होने वाला है मेरा. एंड जस्ट अ डे बिफोर द प्रमोशन न्यूज वाज टू बी ब्रोकन टू यू, यू आर टोल्ड प्रमोशन तो नहीं होगा आपका. और ना सिर्फ प्रमोशन होगा आपका, प्रमोशन तो छोड़ो, आपको इस कंपनी में भी रहने नहीं दिया जाएगा. हाउ वुड यू फील? यू विल फील एंग्री. एब्सोल्युटली राइट. आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्से से भर जाएगा, दुनिया भर को कोसेगा, अपनी किस्मत को कोसेगा, गालियां देगा बॉस को, कंपनी को, भाग्य को, किस्मत को, अपने कलीग्स को, बोलेगा अनफेयर है, ये तो बायस्ड है, ये तो मतलब यू विल गो टू द कोर्ट एंड यू विल फाइट, एंड क्या क्या करोगे तुम एक प्रमोशन को लेके. एंड हियर हिज लाइफ, जिस मतलब वी टॉकिंग अबाउट कोरोनेशन हैपन. तो ये अगर आप देखो तो ये एक किस भाव से उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, किस कामनेस के साथ
श्री राम ने जो है इस आज्ञा का एक्सेप्ट किया कि ये पिताजी का की आज्ञा है, उनका आदेश है. And without being disturbed, without getting angry, without being frustrated, he left. And he goes to his mother's cabin. And she says, माँ, पिताजी की आज्ञा है कि उनका आदेश है कि मैं राजा ना बनूं और मैं जाऊं वनवास में, तो मैं जा रहा हूं. And his mother was all tears. तो तो आदमी एक इंसान जो है अपने आप को विक्टिम कार्ड बना ले. यहाँ तो छोटी छोटी बातों में विक्टिम कार्ड बन के खेलते रहते, छोटी छोटी बातों में विक्टिम बने घूम रहे हैं. जहां मौका मिले वहां विक्टिम कार्ड प्ले करो. नेवर इन हिज एंटायर लाइफ श्री राम प्लेड दैट विक्टिम कार्ड कि देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ है. एंड ही वेंट टू द फॉरेस्ट. और लगा कि इस फॉरेस्ट में जाके चलो भाई, अब तो 3 लोग रह रहे हैं, चलो ये अपने जिंदगी जी लेंगे. लुक एट द वे ट्रेजेडी हिट हिम देयर आल्सो. एंड मां सीता को उठा के रावण ले गया. वो द ट्रेजेडी. एंड देन व्हेन ही केम बैक आफ्टर ऑल दैट, जो उन्होंने युद्ध जीता और फिर मां सीता को वापस लेके आए, लुक एट द ट्रेजेडी अनफोल्ड वन मोर टाइम where he had to give up on Masita. So the mind is, if you were to see tragedy after tragedy after tragedy, it's a collection of tragedies. But it's not for us to hold on to the tragedy. It is for us to see that behind the tragedy, the way he stayed composed, calm, the way he was himself. And not even once in the entire Ramayana we have even a mention of Sri Ram losing his composure, losing his cool. Not even once. And there are so many other stories there if you were to see. But one thing we can pick up from him is that life is the way life is. Life is sometimes unfair, it's ruthless, it's merciless, it's unjust, it's unfair. Can we just pick up this when next time when life is unfair with us? Can we just pick up this very aspect of Sri Ram's life with him in our mind, with him in our thoughts, that how he handled that big thing? अरे ये तो छोटी चीज है यार. कि आप मीटिंग में जा रहे हो and somewhere on the way, it was not your fault, you were driving well, somebody come and banged into you. आप अपनी गाड़ी अच्छी चला रहे थे, वो ही पी के आया और उसने ठोक दी आपकी गाड़ी. That's the way life is. How would you handle that situation? That's such a tiny, teeny, weeny situation. Somebody went through so much. So much. The next time, anything which disturbs you, anything which kind of shakes you, takes away your composure, takes away your calmness, takes away, if in the future something happens, I think this very thought, श्री राम का मनन करना, उनके बारे में सोचना मन में, और कि उन्होंने जिस ढंग से हैंडल किया, ये तो कुछ भी नहीं है. आई एम श्योर श्री राम नैया पार करा देंगे. यस सर, नो? हाँ जी. You there with me? Hello? सांस ले रहे हो? ठीक है, सांस लेते रहो. So don't get disturbed and perturbed. Don't get sidetracked from what you ought to do just because some things are not happening your way. There are people who are going through a lot more. And that's why he is called as Maryada Purushottam. He set the ideals for humanity. Another thing which we all can take back. What a great HM we have today. Thank you so much. God bless you.
And I'm sharing this from a perspective because historical perspective कि हम जब सीखने को तैयार बैठे हैं, हम बात करते हैं जैक वेल्च ने ऐसा कर दिया लीडरशिप में, हम बात करते हैं साहब कि नारायण मूर्ति ऐसा बोल रहे हैं, हम बात करते हैं साहब आनंद महिंद्रा ये बात कर रहे हैं, तो हम उन लोगों से सीख रहे हैं ना अबाउट बिजनेस, मे बी अबाउट लीडरशिप, हम सीख रहे हैं। हम बात करते हैं फ्रॉम फ्रॉम स्पोर्ट्स पीपल, धोनी ने ऐसा लीड किया, कोहली ने ऐसा बैटिंग किया, हम सीख रहे हैं लोगों से। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये तो हमारे सामने के लोग हैं, तो हम सीख रहे हैं। तो इस तरह आप पीछे जाओगे तो कोई हमसे 20 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 100 साल पहले हमसे जिया है, तो हम कहते हैं हमने उनसे सीखा, हमने उनसे समझा। इस तरह ये श्री राम हजारों साल पहले आए, जिए, तो हम उनसे जब सीख रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाई सडनली इट बिकम्स अरे ये तो रिलीजियस मैटर हो गया। अरे व्हाई इट कांट बी हिस्टोरिकल मैटर? व्हाई इट कांट बी? तो बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं होना कि आपने महाराणा प्रताप से सीखा, बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं होना है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखा, बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं होना है। आपने श्री राम से सीखा, बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं होने का, एकदम सीना ठोक के बोलने का कि हमने प्रभु श्री राम से ये सीखा, ये समझा। जय श्री राम का मतलब वही है कि आपके अंदर का जो है, कहीं राम को, वो सोते हुए राम को जगाए और बोले यार मैंने ये हैंडल किया है, तुम तो ये छोटी चीज हैंडल करो। दैट्स व्हाट ही वांटेड अस टू अंडरस्टैंड। फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, इफ यू वुड सी, ऐसा बोलते ना कि शादी हो गई, विवाह हो गया, what could a husband do for a wife? If you were to ask yourself, all those who are married, what could a husband do for a wife? And look at him. For his wife, he went all the way from north to south to another country without knowing, without having any guarantee, without having any clarity कि मेरी वाइफ मुझे मिलेंगी नहीं मिलेंगी। कौन इंसान ऐसा हजारों किलोमीटर जाता है? और उन दिनों जीपीएस नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि हम पता करें कहां पर है। And he did not give up on the search of for his wife. He did not give up. So what could be a much more beautiful example of love than this? कि वो चले वहां से, and then he kept on. He didn't give up. And there were so many times when he came across moments where the news which was given to him, उस news के हिसाब से वहां गए तो वहां नहीं मिली माँ सीता, and he went on, went on, went on, went on. कौन इंसान है जो अपनी वाइफ के लिए इतना कुछ करने को तैयार है? It's a great example and a great story for what a husband and a wife relationship is all about. तो कितना लोग कभी कभी बोलते हैं कि ये कैसे पति है, इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया किसी के कहने में। मैं आता हूं उस बात में भी, लेकिन ये भी तो देखो कि एक इंसान अपनी पत्नी के लिए कितना दूर गया, एक और कंट्री में जाके he fought and he won the war and he got back his wife. What could be a much more uh, powerful display than this of a love between a husband and wife? And look at the way Ma Sita, when Lord Ram was asked to leave the kingdom, तो कोई शादी होती है तो लड़कियां अपने सपने लेके आती हैं कि मैं इस घर में रहूंगी, ये राजघराना है, एंड सब इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। एंड जस्ट अ फ्यू years into marriage, she sees her husband being asked to leave that entire luxury, and he's asked to leave, and not only leave, he's asked to go and stay in the forest for 14 years. And she, without even blink of an eye, she stands next to him. What could be a, मतलब इससे बड़ा क्या आपको चाहिए एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? इससे बड़ा क्या हो सकता है? सो दिस इज अ ब्यूटीफुल, कभी भी आप हस्बैंड वाइफ में अगर आप देखो तो आस्क योरसेल्फ, what am I doing for my wife? What am I doing for my husband? In comparison to what Shri Ram did. So let the
Ram inside you wake up. Let Ma Sita inside you wake up and make you do a few things which will make the relationship much more stronger. Let's move on. Since time is less, let me move on to a few. When he came to know Ma Sita had been kidnapped, just two of them, Ram and Lakshman, they set about. No resources, no kingdom, no weapons, no chariot, कोई रथ नहीं, कोई घोड़े नहीं, कुछ नहीं, चल दिए. And by the time they reached Rameshwaram, they had a huge army. I'm just sharing with you. कितनी बार हम रोते हैं ना, अरे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास कैपिटल नहीं है, अरे हमारे पास नॉलेज नहीं है, अरे हमारा तो एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुआ है, मराठी मीडियम स्कूल में हुआ है, अरे हम तो छोटे शहर में पले बड़े हैं, अरे हमारा इतना एक्सपोजर नहीं हुआ है, अरे हमारा हम तो छोटे से एरिया में है, हमारे फैमिली ने हमारे लिए कुछ छोड़ा के नहीं रखा हुआ है. इतनी बार हम रोते रहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं. एंड श्री राम्स लाइफ इज ऑल अबाउट कि रिसोर्स नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने रिसोर्स कैसे कलेक्ट किए. कुछ तो मैजिक रहा होगा उनके अंदर, कुछ तो उनके अंदर ऐसा भाव रहा होगा जिस भाव से हनुमान हनुमान बन गए, सुग्रीव वहां से आ गए, वानर सेना आ गई, भालू आ गए, वीर आ गए, सब आ गए साथ में. और जिनकी लड़ाई थी नहीं, उन्होंने वो लड़ाई अपनी मान ली. क्या ताकत रही होगी उनकी, क्या मकसद रहा होगा. अरे हम तो बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस में हम पैसा दे रहे हैं लोगों को कि पैसा दो और काम करो, तब भी लोग काम नहीं कर रहे हैं ढंग से. यहां तो जो लड़ाई उनकी थी नहीं, उस लड़ाई को उन्होंने अपना बना लिया और साथ चल दी. तो जब कभी भी आप सोचो ना कि आपके मन में बात आ जाए, यार आई डोंट हैव रिसोर्सेस, अरे आई लैक रिसोर्सेस, या फिर आप फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले करो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ दिया नहीं गया है. सो थिंक ऑफ प्रभु राम, बिना रिसोर्स के निकल गए और रिसोर्स बिल्ड करते गए और अपनी मंजिल तक पहुंच गए. एंड लुक एट द वे पीपल सरेंडर्ड देमसेल्व्स टू हिम. किस ढंग से वो राम सेतु जब बना तो कैसे सब वानरों ने वो पुल बनाया. तो एक कहानी है कि एक गिलहरी जो है वो भी आई और उसने भी अपना योगदान करना शुरू किया उस पुल को बनाने के लिए. तो उसके वो सब वानर लोग उसकी मजाक बनाते, तू कितना करेगी. तो वो आई प्रभु श्री राम के पास और श्री राम ने उसको उतनी ही इज्जत दी जितने वो सबसे बड़े वानर को दे रहे थे, कि वो जितना बड़ा पत्थर डाल पा रहा था और ये छोटे 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 पेबल्स डाल रही थी, तो उन्होंने उतनी ही इज्जत इसको दी. तो क्या भाव रहा होगा और क्या कनेक्ट रहा होगा सब जीव जंतुओं से उनका, कि सब उनके सपोर्ट में आ गए, सब उनके लिए खड़े हो गए. एंड नेवर इवन वंस ही यूज्ड his magical powers. As a human being who was compassionate, who was filled with love, who was calm, composed, focused, he carried on with his vision of getting his wife back. Another aspect which you can pick up, which हुआ ये कनेक्ट हो रहा है मेरे साथ, हो चल दिए तुम लोग कहीं जय श्री राम करते हुए. हाँ. From the तो मैं तो सिर्फ आपको इंस्टिगेट कर रहा हूं. देयर आर सो मेनी वंडरफुल पीपल इन द वर्ल्ड अराउंड हु विल टेल अ लॉट मोर अबाउट श्री राम. देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव स्टडीड, दे हैव पुट इन years of their lives into understanding and Sri Ram's journey and his life. तो I'm instigating you कि आप इसमें इंटरेस्ट लो और पढ़ो. दुनिया की सबसे बड़ी लीडरशिप बुक तो अपने इतिहास में हम उसको छोड़ देते हैं.
चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, मतलब अगर आपने ये दो ग्रंथ अगर आपने अंदर कूट कूट के भर लिया ना, मुझे मेरा विश्वास करो, यू वुड नॉट नीड एनी अदर लीडरशिप बुक, यू वुड नॉट नीड एनी अदर मैनेजमेंट बुक, you would not need any other relationship understanding book, you would not need any other book on righteousness, on dharma. ये दो ग्रंथ ही इतने पावरफुल हैं, अगर आपने उसको, you just remove the, अगर रिलीजन नहीं तो रिमूव द रिलीजन साइड, इनफैक्ट है ही नहीं, वो रिलीजन के बारे में नहीं है, they are all about virtues, they are all about life, they're not about things which are supernatural or things like that. They're all about how people live their lives. And वो इतना सदियों से चलती आ रही हैं वो कहानियां, तो वो कहानियां ऐसी मन गढ़ंत कहानियां नहीं है, they're historical stories. So find, I'm just instigating, I'm just triggering you that you take interest and you find some source around you, any guru around you who can give you some more insights about these two wonderful historical epics we have with us. तो मेरा वो उतना ही काम है, मैं I am not going to go deeper into it. I feel you have to go deeper into your quest. Another aspect which I feel is, look at the way he told the world through his life about dharma. Dharma means living a life of certain principles. And he shared through his life that you got to live your life out of dharma in different roles. So पुत्र धर्म क्या होता है? So पिता की आज्ञा है तो फिर उसमें क्वेश्चनिंग नहीं है. तो if a father is ordering something, तो पुत्र धर्म क्या होता है? माँ ने क्या बोला, पुत्र धर्म क्या होता है? And he just lives that. He's in the jungle, and then when he fights Ravan, he doesn't take a chariot because he is not. He's been, उनको exile दिया हुआ है, उनको वन में वास करने को बोला गया है, तो फिर एज अ क्षत्रिय जो उनके पास जो होता है वो ही विल नॉट यूज दैट बिकॉज वो राजकुमार नहीं है. तो उनका हर जगह उनका धर्म उन्होंने पालन किया, चाहे वो भाई के प्रति उनका धर्म हो. ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंगर अगेंस्ट भरत, कि जब भरत मिलने आए वहां पर, तो इट वाज नॉट दैट यार इसने मेरा राजपाट ले लिया, इसने अपनी माँ के साथ मिलके जो है मुझे बाहर करवा दिया. He had the same composure, he met him with the same love as he would normally meet. And that's what the brothers gave him back. In fact, the story goes that when Shatrughan came to know, he was in his Nanihal, he came to know about कि मंत्रा ने जो है ऐसा कई माँ को बोल के भाई राम को वनवास करा दिया. So he wanted to kill Mantra. And that's where Bharat comes in and he says, शत्रुघ्न अगर तुमने इनका वध किया तो श्री राम कभी हम लोगों से बात नहीं करेंगे, हमारा मुंह नहीं देखेंगे. That's the kind of virtue that the place which they had for Shri Ram, कि जिन्होंने उनको बाहर निकाला, आप उनको नुकसान पहुंचाओगे तब भी वो उनका मुंह नहीं देखेंगे. So when he came back and he had, उनका राजधर्म था, वो बोलता है कि धोबी ने जो है, किसी धोबी ने बात करी, तो धोबी इज जस्ट एक वो उसका एस्पेक्ट है स्टोरी का. सो धोबी इज द कॉमन मैन. तो श्री राम को समझ में आया कि आम जनता ये बात कर रही है, और आम जनता को अगर ये फीलिंग है तो उनका फिर राजा पे से विश्वास कैसे रहेगा? मैं तो उनके लिए आया हूं. सो इट्स नॉट अबाउट कि किसी की बात सुन के मैंने ऐसा किया. दिस इज द टॉक ऑफ द कॉमन मैन. तो राजधर्म को उन्होंने सर्वोच्च रखा और उसके लिए अपने खुद की पर्सनल लाइफ को उन्होंने सैक्रिफाइस किया. तो आई फील he stood for his dharma, he stood for righteousness, he stood for justice, he stood for his duty. तो अब मुझे लगता है कि ये इतना कुछ समझने में, तो हम एज एन एंटरप्रेन्योर हैं तो हमारा भी तो कुछ धर्म होगा एज एन एंटरप्रेन्योर. अगर हम टीम मेंबर हैं तो हमारा भी तो कुछ धर्म होगा एज अ टीम मेंबर. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब अंग्रेज आए उसके पहले भी जब ये इन्वेजन हुए तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि धर्म होता क्या है, तो उन्होंने धर्म को बना दिया रिलीजन.
तो हम जो भी रोल्स प्ले कर रहे हैं उसमें हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स है कि नहीं, वैल्यूज है कि नहीं. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर वी लिविंग आउट ऑफ वैल्यूज, आर वी लिविंग आउट ऑफ सम प्रिंसिपल्स, उसको बोलते हैं धर्म. सो पुत्र का धर्म है, पिता का धर्म है, पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है, टीम मेंबर का धर्म है, एंटरप्रेन्योर का धर्म है, सिटीजन होने का धर्म है, दोस्त का धर्म है. तो सबके कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ वैल्यूज हैं. क्या हम उसमें जी सकते हैं? दैट्स व्हाट श्री राम इज सेइंग. And the more you dig deeper, the more you have inputs on that. And even as an enemy, तो रावण से लड़ाई हुई एंड हुआ, उनका वध हुआ, रावण का वध किया उन्होंने. But he gave him the same respect as he would give to a learned soul. And you read about it. There's so many wonderful stories which you will come across. How he treated Raman. How he didn't want to have a war. He requested when he reached Lanka, he requested कि आप सीता को दे दीजिए, हम युद्ध नहीं करेंगे. But when he refused, then he was left with no other option. No other option but to fight and get his wife back. So, मंदिर तो बन रहा है, मंदिर बन रहा है, मंदिर बन गया है, मंदिर में कॉन्सेक्रेशन हो रहा है श्री राम आइडल का, वो होगा. सिर्फ सेलिब्रेशंस ही मत करिएगा, अपने अंदर श्री राम को आने दीजिएगा, अपने घर में आने दीजिएगा, अपने जिंदगी में आने दीजिएगा, अपने हर एक्शन में उनको आने दीजिएगा. जब श्री राम हम सबके दिल में बसेंगे और हमारी हरकतों में, हमारे विचारों में, हमारे जीने के तरीके में अगर श्री राम दिखाई देंगे, तब वाकई में हम बोलेंगे श्री राम अयोध्या आ गए. तब हम बोलेंगे राम राज्य है, क्योंकि राम ही हमारे अंदर राज्य कर रहे हैं. तो जब हमारे अंदर राम राज करेंगे तो फिर राम राज क्यों नहीं होगा. सो आइए 22 तारीख का स्वागत करते हैं. Do whatever you can from your side to celebrate this historical moment, and not only that day but for the rest of our lives. Let's have Sri Ram in us. Let's have his way of life in us, in every action which we do, every act of our life. Let Sri Ram rule that. तो आज का ये HM प्रभु श्री राम के नाम, and take it home and take it ahead and make it a part of your life. So thank you, Naren. Thank you. It's wonderful to have you all there for HM after HM after HM, and do share this HM if you feel ये HM आपको पसंद आया. So इसका YouTube link आप share करिएगा with your friends, your relatives, and let them see it. Not on the religious side, but on a normal human being side. I feel we all need to be blessed with the learnings, with the lives of greats like Sri Ram, and बुलाते हैं उनको अपनी लाइफ में. चलिए, जय श्री राम.